Welcome students to your new session of EVS class. Students, we are doing the chapter Our Country, chapter number 18. And today we will start a new topic which is the people. Okay. Now as we have seen that India is a very vast country. भारत एक बहुत ही बड़ा देश है. Here there are large number of people living in India. They all are known as Indians, but they speak different languages. There are many languages in India. People all over India, they eat different types of food. Like in Jharkhand, हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं. But if you go to south, there the type of food will change. वहाँ पे आपको सांबर वड़ा इडली डोसा ये सब ज़्यादा मिलेगा. If you go to any Bengal country like Kolkata, there you will get sweets, different types of sweets. If you go to Rajasthan, Gujarat, there you will get that dhokla, khandvi. These are famous food there. So if you go to different parts of India, you will get different types of food. There people will speak different types of languages also. Kolkata people will speak Bengali. If you go to Gujarat, there they will speak Gujarati. If you go to Bombay, there people will speak Maharashtrian language. So there are different types of languages also. Then one more thing, the dresses, the way the people dress, जो कपड़ा पहन रहे हैं, that is also different for different parts of India. Like here, see, a picture is given. Here different dresses of people are shown. Like if you see this one, this and this is a Bengali dress. Okay, then this girl, she is wearing a Kashmiri dress. These two, they are the dresses of south. This one, Rajasthan. So means the picture is showing that people in different parts of India wear different types of dresses. मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, इन इंडिया देर इज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. भले ही लोग अलग अलग ड्रेस पहन रहे हैं, अलग अलग तरह के खाना खा रहे हैं, दे आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन फिर भी वहाँ अनेकता में एकता है. ओके हम लोग बोलते हैं कि वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं. सो दिस इज़ वाई इंडिया इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. Now you see here one thing is given that we dress differently, means हम लोग जैसे मैंने कहा that we wear different types of dresses. जैसे अगर तुम पंजाब जाओगे वहाँ पे क्या देखोगे, जो भी फीमेल है they will wear सलवार कमीज. Okay, in towns and cities people dress similarly. Like अगर हम लोग शहर में रह रहे हैं तो there you will not find that people who is from Bengal is wearing a Bengali dress, people who is from Rajasthan is wearing a Rajasthani dress, or people who is from South is wearing a South Indian dress. No, generally they wear same type of dresses. Like अगर आप मेल पर्सनस को देखिए then वो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, और जो फीमेल पर्सनस है वो लोग जनरली साड़ी या सलवार कमीज़ पहनती है. बट इफ़ यू गो टू अ विलेज, आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आप गांव में जाते हैं वहाँ वो लोग उस जगह का ड्रेस को मेंटेन किए हुए पहनते हैं. दैट इज़ नोन एज द ट्रेडिशनल क्लोथ. मीन्स वहाँ का जो मूल रूप से जो वहाँ का ड्रेस है, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये साउथ का ड्रेस, तो शहर में आपको पता नहीं चलेगा कौन साउथ के लोग हैं, कौन बंगाल के लोग हैं, कौन पंजाब के लोग हैं. लेकिन अगर साउथ के किसी गांव में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के लोग जो हैं ये साउथ का ड्रेस पहने हुए हैं. सो टू नो अबाउट द ड्रेस, इट इज़ पॉपुलरली शोन इन अ विलेज. ओके, so basically we should know that India, here there are people of different language speaking people eating different types of food, people wearing different types of clothes. And one more thing, India is a secular country, means here people are free to practice any religion. हमारे इंडिया में लोग हैं जो अपने अपने धर्म को ईजिली फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट रिलीजन्स आर फॉलोड इन इंडिया. Now, people who are following their own religion, the place of worship is also different.
मीन्स अगर हम हिंदू हैं तो हम भगवान की पूजा कहाँ करने जाएंगे? मंदिर में जाएंगे. क्रिश्चियंस है, दे विल गो टू अ चर्च. मुस्लिम है, they will go to a masjid. Similarly, there are different people who follow different religion in India, and their places of worship is different. We are going to see that only. See here, we have different ways of praying or follow different religions. Like Hindus, they pray where? In a temple. Buddhists and Jains also go to temple. Muslims will go to a mosque or masjid. Christians will go to a church. Sikh, they will go to a gurudwara. And Jews, they will go to a synagogue. And Parsis will pray in a fire temple. But what we are doing wherever we go, भले ही हमारे मंदिर दूसरे दूसरे हैं, but we all are praying to God. Okay, so God is one, but there are different ways to worship him. So this is the chapter about our India. See here pictures of a temple is given. This is a mosque, this is a church, and this is the golden temple, Gurudwara. So these are different places of worship. Whatever it is, different languages, different costumes, different food, different religion is practiced in India, but we all are Indians. So this is a chapter about our country, students. Hope you have understood. Thank you.